Okay, good afternoon, students. So, in the last class, we have discussed about heart, a specimen of heart. तो last class में हम लोगों ने specimen discuss किया था heart के बारे में. Okay, I guess you all remember that. So today we will talk about brain. So do you remember brain? I think I've already discussed about this in the previous class also. Do you remember brain? Yes. Do you remember or not? Do you remember or not? Yes or no? No, ma'am, not remember. Not remember. What about others? But I think I have discussed about this. It's not it. Yes, ma'am. Yeah, No, ma'am. I've already discussed. Sujata Dole, do you remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I have already discussed. Maybe you missed the class. Okay, it's okay. I'll repeat again. So this, Human brain, no, ma'am. हाँ हाँ हमीदा, Brain. हाँ Human brain. Okay, it's okay. I'll repeat again. So this is specimen of brain. This is brain. Okay, so I will just read. Okay, can you see the screen? This brain, can you see this? About this brain? Can you see the screen, students? Screen दिखाई दे Yes, रहा है? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so this is the brain. And the brain is what? They are the center of your thoughts. Means whatever you are thinking, the brain is a center. Understand? And it interprets means what? You will be able to know what is occurring inside as well as outside through your brain. Internally like how? Internally like your body function, okay, your digestive system, your cardiovascular system, means whatever systems are there inside you, within you, you'll be able to just know it with the help of the brain. तो ब्रेन एक मतलब सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं बाहर से भी अंदर से भी. बाहर मतलब अंदर में कैसे हम लोग को वो होता है, मतलब कैसे फंक्शन करता है, मतलब ब्रेन के द्वारा मतलब हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम बोलो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलो, ये सब क्यों फंक्शन करते हैं? ब्रेन के वजह से ये सब अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है. एज वेल एज एक्सटर्नली मतलब बाहर. Externally means outside how you are working, means maybe your physical activities which you do, how you perform, okay, all these things your brain helps you in that thing. And the brain is what? They are divided into different parts. The first one is a cerebrum. This is the cerebrum. And next is what? Diencephalon. In the diencephalon you will be getting hypothalamus and thalamus. Understand? In the diencephalon you will be getting hypothalamus and thalamus. Next is brainstem. This is the brainstem.
In the brain stem, you will be getting midbrain, this one. Next is pons. Next is medulla oblongata. So these are the parts which you will be getting in the brain stem. Next is cerebellum. So this is cerebellum. Is it clear? तो ये ब्रेन हम लोग को 4 पार्ट्स में मिलेगा. पहला क्या है? सेरिब्रम. नेक्स्ट क्या है? डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है फिर से. एक है हाइपोथैलेमस ये और थैलेमस ये. नेक्स्ट क्या है? नंबर 3 नंबर ब्रेन स्टेम. तो ये ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या है? मिड ब्रेन. ओके, ये मिड ब्रेन है. इसके बाद पॉन्स है. उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा और लास्ट में क्या है? सेरिबेलम. तो ये 4 पार्ट्स है ब्रेन का. इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो मैम. हेलो. हेलो. सेरिब्रम का काम क्या है मैम? मैं बोलूंगी, पहले पार्ट्स तो पता हो, उसके बाद मैं बोल दूंगी. ठीक है? First you Okay, ma'am. know the parts, then I will discuss with you the function. Okay मैम. Okay. First you have to know the parts. Then only I will explain to you one by one. Okay, is it clear about the parts, everyone? Okay. Okay, so these are the parts. Cerebrum, then diencephalon. Diencephalon we will get hypothalamus and thalamus. Next is the brainstem, this one. It is midbrain, pons, medulla oblongata, and the last is cerebellum. Okay. So the first one, that is the cerebrum. This one, the first one. So the cerebrum, what you will find here in the cerebrum, you will find that they are the largest part of the brain. ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का. Okay, ये सबसे बड़ा पार्ट है ये cerebrum. तो it is divided into right and left hemisphere. Understand? This cerebrum, they are divided into right and left. तो ये cerebrum दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है. क्या है? राइट और लेफ्ट. राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है. तो उसका फंक्शन क्या है? So what is the function of the cerebrum? What do they do? They interpret touch. Interpreting touch. Interpreting touch means what? Just by touching some things, like you'll be able to detect it. You'll be able to know it. What is that thing? It means that. Understand? Interpreting touch. So interpreting touch का मतलब क्या है? Interpreting touch मतलब just तुम्हें कुछ चीज छूने से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या है. ठीक है? उसका मतलब है interpreting touch. Next क्या है? Vision and hearing. So this cerebrum, they also have seeing things, seeing the surroundings, and also as well as hearing. Also you will be able to hear it with the help of the cerebrum. Next क्या है? Vision and hearing. मतलब तुम लोग देख सकते हो cerebrum की वजह से, और hearing मतलब सुन भी सकते हैं. ठीक है? Next is speech. As well as speech means you with the help of the cerebrum you are able to speak also. You can speak. So next क्या है? Cerebrum. Cerebrum हम लोग बोलने में भी मदद करते हैं. ठीक है? बोलने के लिए भी ये मदद करते हैं ये cerebrum. Next is reasoning. Reasoning means what? You will be able to give some reasons behind your failure or behind your unsuccessfulness or anything. You'll be able to reason it. Maybe you came late to university. Maybe you came late for class. It might be because of personal issues, maybe because of traffic jam, something like that. So you'll be able to reason it, why you were late and so on. So it means that reasoning. Okay, reasoning मतलब कारण. ठीक है? मतलब तुम किस वजह से लेट हुआ आज.
ट्रैफिक जैम की वजह से भी हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, तो तुम बोल पाओगे कारण, उसको बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोशंस, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस ऑल्सो, फ्रॉम हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉयफुलनेस, ब्लिसफुलनेस। नेक्स्ट क्या है, इमोशंस, तुम अपना इमोशंस कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि हंसना, रोना, वो सब। Next is learning. You will be able to learn some things also with the help of this cerebrum. Next is find control movement. Means you will be able to do some physical activities, some physical things. Movement. You will be able to move your, your parts. Okay, legs and arms. All these things you will be able to do it with the help of this cerebrum. नेक्स्ट क्या है, सेरेब्रम की वजह से तुम मतलब काम कर पाओगे, जैसे कि चलना, ठीक है, काम करना, हाथ पाँव, वो सब काम करना। Did you understand about cerebrum? Yes, ma'am. Next is cerebellum, this one. About this diencephalon, no, hypothalamus, I have already discussed with you in the endocrine system, so I won't touch anymore. ओके, ये डायनसेफेलॉन के बारे में मैंने ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस किया था, इसलिए मैं टच नहीं करूंगी। ओके, नेक्स्ट इज cerebellum. This is your cerebellum. So the cerebellum is located where? It's located under your cerebrum. So this is your cerebrum, and they are situated here under the cerebrum. This is your cerebrum, and they are under this. And what is the function of this cerebellum? The function is that they coordinate muscle, means coordination of muscle, means synchronize. Understand? They synchronize each other. Means they will synchronize in between your right hand, left leg, right leg. So in this case, they will synchronize. They will coordinate. They will be in sync. Do you understand? तो ये cerebrum, ये cerebrum, ठीक है, ये cerebrum है और ये cerebellum है। तो ये सेरेबेलम ठीक सेरेब्रम के नीचे में है, और इसका काम क्या है, ये सेरेबेलम का काम, ये मतलब कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट हैंड, मतलब राइट हैंड काम करेगा और लेफ्ट हैंड ऐसे हो, ठीक है, दोनों एक साथ काम करेंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। And next is maintain posture and balance, means you'll be able to maintain your posture, maybe while sitting, standing. Understand? You'll be able to maintain your body posture. So next क्या है, हम लोग का जो posture है, खड़े होना, बैठना, वो सब अच्छे से posture मतलब अच्छे से रह पाएंगे cerebellum के वजह से। Did you understand everyone? Ma'am. Okay, next is brainstem. This is the brainstem. So this brainstem, they act as a relay center, means continuous, you can say. Okay, they are continuous. I mean, here is the brainstem, and they will go down. That is in the spinal cord side. Means relay. It means relay. तो ये brainstem relay center है। relay मतलब continue होना। ठीक है, यहाँ पे spinal cord है ना, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है। And this brainstem, they lie where? They lie in between your cerebrum. This is your cerebrum, and this is your cerebellum. तो ये brainstem कहाँ से कहाँ होगा? cerebrum और cerebellum के बीच में ये brainstem, ठीक है?
So, what is the function of this brainstem? The brainstem, it has got various functions. Also, you can say involuntary. Involuntary means what? Which you can't control. तो ये ब्रेन स्टेम कैसे काम करते हैं, मतलब इनवॉलंटरी फंक्शंस होता है, मतलब जो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेने में, हार्ट रेट मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, वेक एंड स्लीप साइकिल्स मीन्स दे ऑल्सो मेंटेन या वो लोग हम लोग का सोने का रूटीन भी वो करता है, देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन, दे आल्सो हेल्प्स यू डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दे आल्सो हेल्प्स यू इन, आई मीन, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग एंड swallowing, कुछ गिलने में भी ये मदद करता है। So these are the things which you will find in the brainstem. It is breathing, heart rate, it is in your cardiovascular system you will be getting. Body temperature means they will maintain your body temperature, and they will also maintain your sleep cycle, okay, your sleeping pattern. Next is digestion. They also helps you in digestive system part. They also helps, I mean, sneezing part, then coughing, then vomiting, then swallowing. So these are the things which you will find. The brainstem. Is it clear everyone about the brainstem? सब लोग को समझ में आया ब्रेनस्टेम के बारे में? Yes, ma'am. Okay. So in the brain, you will find that they are divided into different lobes. That is frontal, parietal, temporal, occipital. Okay, this one. The cerebral hemisphere, they have got 4 lobes. Understand? First is the frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. 4 lobes. The brain. Frontal lobe is here at the front. One you have, okay, one frontal lobe. And next is what? Parietal lobe. Parietal lobe is here, this and this. Okay, two you have parietal lobe. And next is what? Next is temporal lobe. So temporal lobe also you have two. One, two, temporal lobe. Next is what? Occipital lobe. Occipital lobe is here at the back side, here. So total we will be getting 4 lobes. First is frontal, parietal, temporal, occipital. Is it clear? हम लोग को 4 lobes मिलेगा cerebral hemisphere पे। तो पहला क्या है? frontal lobe, ठीक है, यहाँ पे एक है frontal lobe, parietal lobe एक दो, temporal lobe same 1 2 दो मिलेगा, और occipital lobe एक यहाँ पर मिलेगा। Is it clear everyone? Yes, ma'am. So each lobe they have got various functions. तो ये जो सारे lobes है, ठीक है, frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, मतलब ये सारे lobe का काम है, ठीक है, उन लोग का खुद का function है। So all these lobes you will get various functions. They will get different functions. Sorry. So the first one which we'll be finding is personality, behavior, emotions. Means the frontal lobe, they control your personality. Personality like what? Like how you represent yourself in front of your friends, how you represent yourself in front of your family, all these things. So all these things, the frontal lobe helps you in that. Next is behavior. So how will you behave in front of your friends? How will you behave in front of your family? So the frontal lobe, they helps you in that thing. Next is emotions.
Emotions in a sense like what? Emotions in a sense like they also control your emotions, happiness, sadness, all these things. तो ये जो पहला लोब है जो फ्रंटल लोब है उसका काम क्या है? पर्सनैलिटी मतलब तुम्हारा पर्सन कैसा है तुम, मतलब एक पर्सन, ठीक है, मीन्स तुम कैसे अपना पर्सनैलिटी वो शो करते हो अपने दोस्त के सामने या अपने टीचर्स के सामने, ये सब, और कैसे बिहेव करते हो, कैसे तुम अपना बिहेवियर दिखाते हो, ये सब फ्रंटल लोब मदद करता है। नेक्स्ट क्या है? इमोशंस मतलब हंसने का टाइम, मतलब इमोशनली कंट्रोल भी करता है, ठीक है, दुखी सुखी ये सब में भी मतलब कंट्रोल करता है ये फ्रंटल लोब। Next is what? Judgment. Okay, means judgment. You can mostly say moral values, such as if the person is doing right thing or wrong thing. So in that way, the person will be able to judge something. Is it clear? Next is planning. Means with the help of this frontal lobe, a person can plan something also, maybe for future. He or she is planning something. Next is problem solving. The person can solve certain problems also. नेक्स्ट क्या है? जजमेंट। जजमेंट मतलब अगर वो इंसान सही कर रहा है या गलती, मतलब अगर कुछ काम कर रहा है तो सही कर रहा है या ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, ये सब मिलने में थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है, जजमेंट। तुम बोल पाओगे वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग, मतलब फ्यूचर के लिए प्लान भी कर सकते हो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो ये फ्रंटल लोब की वजह से। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज स्पीच। You will be able to speak something, and also as well as you will be able to write something with the help of what? Broca's area. Means in Broca's area, I mean with the help of this Broca's area, a person will be able to speak as well as they will be able to write. तो ये नेक्स्ट स्पीच में हम लोग को क्या मिलेगा? स्पीच में मतलब यहाँ पे ब्रोकर्स एरिया है, मतलब फ्रंटल लोब पे ब्रोकर्स एरिया है, और ब्रोकर्स एरिया के मदद की वजह से एक इंसान बोल भी पाएगा और लिख भी पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? बॉडी मूवमेंट। द पर्सन विल बी एबल टू मूव हिज बॉडी आल्सो। नेक्स्ट क्या है? द पर्सन मतलब एक इंसान अपना शरीर को यहाँ से वहां मतलब मूव कर सकता है। Next is what? Intelligence. The person will be able to know how much intelligent it is. Okay, I mean with the help of this frontal lobe, this intelligence also plays an important role. And as well as concentration, the person will be able to concentrate because of what? Because of the frontal lobe. And next is self-awareness, means the person will be aware of something. तो नेक्स्ट क्या है? इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस में भी ये फ्रंटल लोब का काम आता है। और कंसंट्रेशन मतलब अच्छे से कंसंट्रेट करने के लिए ये फ्रंटल लोब भी मदद करता है। और सेल्फ अवेयरनेस मतलब होशियार होना। इज इट क्लियर एवरीवन? Okay, next is parietal lobe. So this is the parietal lobe. So in the parietal lobe, what you will find, this one, you will find that they interpret language and words. Interprets language and words means what? Means the person will be able to know it. Even though I'm speaking your mother tongue now, but you are able to understand me, isn't it? मैं मतलब अभी कुछ और भाषा से बात कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको बोलते हैं interprets language and words. Okay, so because of this parietal lobe, you are able to know it. And next is what? Next is
sense of touch, pain, temperature. Means with the help of this parietal lobe, a person can know that if the person has touched something, and the person will be able to know pain. And next is temperature. The person will be able to also know the temperature. तो नेक्स्ट क्या है, मतलब पेराइटल लोब की वजह से मतलब उसको पता चल जाएगा कि इसको कौन छू रहा है, ठीक है। और पेन मतलब दर्द सहना, और टेम्परेचर, ये सब में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेट सिग्नल्स फ्रॉम विजन, मतलब उसको दिखाई देगा, मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ वो जो विजन है, मतलब सिर्फ वो सिनारियो अगर उसको दिखाई दे रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही होने वाला है। So interpret signals from vision means what? Means if a person will just see something, okay, if a person will just see something from far or maybe nearby area, the person will be able to just know it. What thing will be occurring? What is the next thing that will be occurring? So in this way, I mean the person will be able to just know it. Understand? Next is motor. Sorry. Next is hearing. Means with the help of the parietal lobe, you will be able to hear it also. So ये parietal lobe की वजह से हम लोग सुन भी सकते हैं। Next is what? Motor, sensory, and memory. Means you will be able to do physical activities because of this parietal lobe. Next is sensory and memory. Means sensory means you will be able to sense something because of this parietal lobe, and as well as memory. You will be able to memorize something with the help of this parietal lobe. तो ये नेक्स्ट क्या है, मतलब हियरिंग, मतलब सुनने के लिए भी मदद करता है। मोटर सेंसरी मतलब मोटर मतलब हम लोग जो काम करते हैं, फिजिकल जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मोटर। नेक्स्ट क्या है, सेंसरी मतलब देखना, महसूस होना, ये वो सब को बोलते हैं सेंसरी। और मेमोरी मतलब कुछ बाय हार्ट करने के लिए भी ये पैराइटल लोब मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट? स्पेशल विजुअलाइजिंग एंड रीजनिंग एंड विजुअल परसेप्शन। मीन्स just by seeing thing, the person will be able to just know what thing will be occurring. Understand? As well as they will be able to tell the reason also. स्पेशल विजुअलाइजिंग एंड रीजनिंग का मतलब क्या है, अगर कुछ चीज होने से, कुछ इंसिडेंट होने से सिर्फ देखने से भी पता चल जाएगा कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा क्या। Okay, are you clear everyone about parietal lobe? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is occipital lobe. This one. So occipital lobe, they helps you in what? Interprets vision, that is color, light, movement. Means with the help of this occipital lobe, you will be able to know what is, I mean, the difference in color. You'll be able to know the difference in color, you'll be able to know the difference in light, and also as well as movement. Okay, color in a sense like this is red color, blue color in that system. Light means dark or too much bright. Movement means what? Means, I mean, your physical body movement. So they will be able to interpret it. ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन क्या है, इंटरप्रेट्स विजन, मतलब कुछ देखने से ही पता चल जाएगा, जैसे कि कलर, कुछ रंग है कि नहीं, ये पर्पल कलर है या येलो कलर है या ब्लू कलर है, तो ये सब कौन मदद करता है, मतलब डिफरेंशिएट करने में ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, लाइट, लाइट मीन्स ये ज्यादा डार्क है या ज्यादा ब्राइट है, पता चल जाता है। और मूवमेंट मतलब हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज जो करते हैं, ठीक है, वो सब ऑक्सीपिटल लोब की मदद की वजह से कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर अबाउट ऑक्सीपिटल लोब एवरीवन?
ma'am. Okay. Okay, in the next class, I will explain to you about the temporal lobe.